Hello students, in programming for problem solving subject, today we will discuss about type conversion in C. The requirement of the type conversion is sometimes we need higher data type to be converted in lower data type as per the programmer's need, or sometimes we are using an expression where different data types variables are used to perform some arithmetic operation. In such case, we need type conversion. So we can define type conversion as a typecast. A type conversion is basically a conversion from one type to another. There are two types of type conversion exist. First one is implicit type conversion and another one is explicit type conversion. Implicit type conversion is a system generated or implicit type conversion done by the system without any external trigger from the user. That's why it is also called as automatic type conversion. Generally, implicit type conversion takes place when in an expression more than one data type is present. In such condition, type conversion takes place to avoid loss of data. All the data types of the variable are upgraded to the data type of the variable with largest data type. What it means? It means in an expression, if we have more than one variable that is used in any arithmetic operation, so we need some type of conversion from one data type to another data type. If it is done by the system, then it is called as a implicit type conversion. We can explain with the help of example. For example, we are writing here a program where we are going to use a two variable, integer x having value 10 and character y having value a. Now we are going to perform an arithmetic operation as x is equal to x plus y, and again another variable float type z, and we are going to perform another arithmetic operation. So what will be the output? The output will be x is equal to 107 and z is equal to 108. Let us explain this program. Here integer x is equal to 10. Here we have variable x with a value 10 and the data type of the x is integer. We have another variable y. The value of y is a and the data type is character. Now we want to perform an arithmetic operation like x is equal to x plus y. We can explain here the value of x is 10, but value of y as given in the program is as a character a. Now we want to add an integer number with a character value. Practically it is not possible. So we have to convert into a same data type, because the data type of y is character. It requires 1 byte in memory, while integer requires 4 byte in memory if we are using GCC compiler. So जब भी इस तरह के एडिशन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, मेमोरी से डेटा लॉस हो सकता है हमारा. अगर ये 10 को हम कन्वर्ट कर दें कैरेक्टर में, तो 4 बाइट का डेटा अगर 1 बाइट में कन्वर्ट होगा, ऑब्वियसली कुछ डेटा लॉस हो जाएगा. टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ लॉस, सिस्टम ऑटोमेटिकली कन्वर्ट दिस कैरेक्टर वेरिएबल into integer variable. And how they convert character variable value to integer value? With the help of ASCII value. We know that the ASCII value of character a is 97. So instead of using a as a value, computer or system uses 97. That's why when you perform x is equal to x plus y, so it will perform operation on 10 plus 97 and the resultant will be 107. That's why when we print the value,
given as 107. Similar case in next example. Here we are using x plus 1.0. The data type x have integer and 1.0 indicates a float value. So we have to convert the integer value into float value because float requires higher memory, right? And the resultant is in a variable z which have float data type. That's why when the integer value, now the value of x is 107, यहां से आपको दिख रहा है, अब हमें वैल्यू x की कितनी मिल चुकी है 107 और प्लस 1.0 ये वैल्यू आपके पास है, इनको ऐड करना है. दैट इज इंटीजर नंबर, इट इज अ फ्लोट नंबर. सो वी हैव टू कन्वर्ट इंटीजर इनटू अ फ्लोट. सो सिस्टम अपग्रेड द 107 इनटू 107.000000 6 times 0 and it will add it with a number 1.0. So your answer will be 108.6 times 0. Right? This is done by system. It is a responsibility of the system to avoid the loss. That's why it is called as a implicit type conversion or automatic type conversion. We are providing here a type of flow where the lower data type is converted into higher data type while performing a mixed expression. Right? हमेशा याद रखिएगा जब हम ऑटोमेटिक कन्वर्जन यूज करेंगे, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन यूज करेंगे, सो लोअर डेटा टाइप हायर में कन्वर्ट होगा इफ वी हैव अ मिक्स्ड ऑपरेशन. ओके, राइट. नेक्स्ट वन इज explicit type conversion. Explicit type conversion is also called as a typecasting. What is typecasting? When user can typecast the result to make it of a particular data type. जब यूजर अपनी डिमांड पे, बट दैट मीन्स सिस्टम ऑटोमेटिकली परफॉर्म ना करे. सिस्टम ऑटोमेटिक परफॉर्म करेगा लोअर टू हायर, बट समटाइम्स यूजर इंटेंशनली या प्रोग्रामर इंटेंशनली चाहता है कि हायर डेटा टाइप से लोअर डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाए, तब हम टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. इसमें क्या होगा, जो इसका सिस्टम हम यूज करते हैं, वी कैन प्रोवाइड द एक्सप्रेशन जिसे हमें कन्वर्ट करना है. सपोज वी आर यूजिंग अ इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर x इज इक्वल टू 10, राइट. Now if we want to convert x into a character, so we can write it as char, that means a typecast जिसमें आपको convert करना है. किसे convert करना है? x को. So this is your syntax by which you can convert integer variable x into character value, right? Let us see with one program. We are writing a program where we have used a double variable x with a value 1.2. Now we want to find increment operation. We have to increase the value of x by 1 and we have to store the result in a integer type variable, say sum, right? तो क्या होगा यहां पे, चलिए देखते हैं. देखिए, जब हम इंटीजर x यूज कर रहे हैं, यहां पर इंटीजर का मतलब वेरिएबल क्या था हमारा, x वेरिएबल था डबल टाइप का, हमें इसमें 1 वैल्यू ऐड करनी है. तो 1 क्या है, 1 इज अ इंटीजर टाइप, राइट. अगर ये ऑटोमेटिक होता तो इंटीजर कन्वर्ट, अगर यहां पे हम इंटीजर का फ्लोट यूज करते या डबल यूज करते, डबल सम यूज करते, तो ये इंटीजर नंबर कन्वर्ट होता ऑटोमेटिकली किसमें, डबल में. लेकिन हम फोर्सफुली इंटीजर में ही रिजल्ट चाहते हैं. सो वी आर गोइंग टू यूज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग. और ऐसे क्या होगा, 1.2 जो डबल वैल्यू थी ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर वैल्यू दैट इज 1 में. नाउ वी कैन परफॉर्म द एडिशन ऑपरेशन 1 + 1, इट विल रिटर्न सम इज इक्वल टू 2. दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग आंसर एज अ सम इज इक्वल टू 2. So to memorize this concept, we can say if we required a conversion from higher data type to lower data type, then we are using explicit type conversion, and if we are using lower to higher,
then we required implicit data type conversion. Okay, that's all about the typecasting and type conversion. Thank you all.